Find out derivative of sine x, where limit h approaches to 0. ये formula है आपका, then you should apply it. Limit h approaches to 0. What it will come? Sine of plus x plus h minus of sine x divided by h. What next step will be? Yes. So the identity, What identity? sir, sin A plus B, No. sin A cos B. No. Sin C plus minus sin D फॉर्मूला लगाओ. Sin C minus sin D लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 cos x plus h plus x by 2. Then comes sin x plus h minus x by 2 whole divided by h. Which I should write as limit h approaches to 0 2 cos. क्या बनेगा भाई? x plus h by 2. 2x plus h by 2 and it is sine of h by 2. अब यहां नीचे h नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? h ये रहा. By 2 से. So it will be by 2 into 2 will do. This part is clearly come out to be 1. 2 से 2. ये 2 से ये 2 कट जाएगा. As h is going towards 0, what it will come? Sin cos x. Cos of x. 2x by 2, it will be cos x. So derivative of sin x, that will come out to be cos x. This is the formula you should remember now. Next, try for cos x, please. Minus. Please try. D by dx of cos x, we should find out by first principle. What I should write here, it will become cos of x plus h minus cos x whole divided by h. Then we have cos c minus cos d. What formula says? Minus 2 sin Minus 2 sine x plus h plus x by 2, then sin sine h x by plus h minus x by 2 whole divided by h, which you should write as limit h approaches to 0 minus 2 sine, ये क्या बन गया? 2x 2x plus h by 2 और यहाँ बना sin of h by 2. by नीचे आपका h है, h ये by रहा. 2 into 2. So by 2 into 2 कर देंगे. ये पार्ट आपका 1 हो गया. 2 से minus 2. ये 2 से ये 2 कट गया. And as h is going towards 0, तो ये 0 हो गया. I get answer as minus of sin x. So we have derivative of cos x now. Minus sin x. It will be minus of sin x. Okay, next question write down please. Derivative of 10x. Please try. Derivative of 10x we should calculate.
We should write this as tan of x plus h minus of tan x whole divided by h. Then Sine cos. convert in sine and cos. Sine of x plus h by cos of x plus h minus sin x by cos of x whole divided by h. Sine A minus B. Then we will write limit h approaches to 0. LCM will take cos x into cos of x plus h sin of x plus h Cos into x. cos x minus Cos x plus h minus sin x into cos of x plus h by h. by h. Yes, is there any doubt? Sine A minus B. क्या बन गया ये ऊपर sin a cos b minus cos a sin b. Sine A minus So formula says sin a minus b. तो sin of x plus h minus of x cos सारा minus divided by cos of x plus h and h. ये x से x कट गया. Then I get it sin of h is here by h. by h is here और ये cos of x into cos of x plus h. ये आपका 1 हो जाएगा. ये cos x ही रहेगा और यहाँ h 0 हो जाएगा तो ये भी cos x हो जाएगा. So what the result comes 1 by Sec square. cos square x, which will become sec square x. So derivative of tan x will be sec square x. Next try please cot x. Derivative of cot x. In place of tan, write down derivative of cot x. Please proceed. What I should write here? Cot x plus h minus cot of x whole divided by क्या रह जाएगा h. सर cosec square x आएगा क्या माइनस का सॉरी माइनस cosec square x. Then it come out to be cos of x plus h by sin of x plus h minus cos x by sin of x and denominator is h. Then we will write limit h goes towards 0. Sin x plus h और sin x इनका LCM ले लिया हमने. So it will come out to be cos of x plus h into sin of x minus sin of x plus h into cos of x. और h आपका है यहाँ पे. What is formula now? Sin a cos b minus cos a sin b. Sine A minus Formula says sin a minus b. minus sine. तो ये आएगा sin a की जगह x आएगा इस बार minus x plus h divided by sin of
x plus h into sine of x into h. Cancel out. Yes, sir. Then we get it. Sine of minus h means minus sine of h. Minus sin h. Yes, sir. और नीचे h यहां क्रिएट कर लेते हैं और ये रह गया साइन ऑफ x प्लस एच इंटू साइन ऑफ x. -1 ये आपका 1 हो गया और h 0 की तरफ जा रहा है तो क्या रह जाएगा -1 sin square x और ये sin x और sin x, it will be sin square x. minus cos square x. So what this result will be minus cosec square x. Clear? Next, write down sec x. Find the derivative of sec x. Please try. Derivative of sec x we should find out. We will write limit h approaches to 0. Sir, sec x. हाँ जी बोलो कैसे करें इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे 1 बाय cos of x plus h minus 1 by cos of x whole divided by h. Then we will take the LCM. Limit h approaches to 0. LCM is cos of x plus h into cos x. यहाँ आ गया आपके पास cos of x minus cos of x plus h whole divided by h. Then we will write limit h approaches to 0. Cos c minus cos d -2 sin minus 2 sine 2 c Sir, plus. 2. So minus. Sorry. Then sine x minus h by 2 divided by h into cos of x plus h into cos of x. Then what this will come minus 2 sine of 2x plus h by 2. यहां क्या आएगा साइन ऑफ माइनस h by 2 h by 2 plus Yes, sir. होल डिवाइडेड बाय ये रह गया h यहां रख रहा हूं मैं cos x cos plus of h, x plus h cos into cos of x. ये माइनस और साइन ऑफ माइनस थीटा कैंसिल होके प्लस कर जाएगा ये. h by 2 अब यहां आया साइन h by 2 तो इसको बाई 2 इंटू 2 कर देंगे. 1 and 2 and 2 ये पार्ट आपका 1 हो गया. ये 2 से ये 2 कट गया h cos और h 0 की तरफ जा रहा है तो व्हाट आई गेट हियर साइन ऑफ x ऊपर आएगा tan x नीचे cos x आएगा और एक cos x आएगा. 2 cos x हो गए. Cos square x. 10x sec x. बनेगा 10x और ये बन जाएगा sec x. So your result come out to be 10x into sec of x. ये आंसर हो गया. cos x का Next cosec x. Please do it.
डेरिवेटिव ऑफ cosec x. Sorry. ये हो जाएगा cosec of x plus h minus of cosec x whole divided by h. Then we should convert this in sine. तो ये बना 1 by sine of x plus h minus 1 by sine of x whole by h, which you should write as limit h approaches to 0. LCM will be sine of x plus h into sine of x. Here I say sine of x minus sine of x plus h x plus h whole divided by h. sin c minus sin d. 2 cos Sin c minus sin d we will apply. क्या होता है भाई? 2 cos 2 sin c minus cos x plus h by 2, then come out to be sine of x minus h by 2. Here I get it sine of x plus h into sin x, and here it comes out to be h. ये x से x कट गया, ये माइनस h by 2 आ रहा है, तो यहां by 2 into 2 कर देते हैं और इसका जो माइनस है वो बाहर निकाल लेता हूं. This come out to be 2 cos of 2x plus h by 2. ये हो गया आपका sin of h by 2 sin of x plus h sin of x h by 2 और h by 2 into 2. 2 से 2 ये पार्ट 1, ये 2 से ये 2 कट गया. And now as h is going towards 0, क्या बचा भाई? माइनस cos x, ये भी sin x upon the sin x sin into x, sin x. minus cot x cosec ये तो cot x cosec x minus cosec x हो गया. माइनस cot x सर cosec x. हाँ जी, सर किसी का डिफरेंशिएशन वही आ सकता है क्या कभी, मतलब e पावर x का आया है ना. ठीक है भाई, ये सारे रिजल्ट अब आपकी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आ जाने चाहिए, जो मैंने आज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए हैं. कुछ और रिजल्ट्स कराऊंगा बट दे आर नॉट स्टैंडर्ड, वो हमको केवल फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं बट स्टैंडर्ड नहीं है वो. बट नाउ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑलरेडी वी गॉट x पावर n nx n minus 1. दूसरा हमने किया e पावर x e पावर x e पावर x किया तो ये आया a पावर x log log a a. base c sin x cosec sin x का हो गया cos x, minus sin cos x minus sin x cos x का हो गया माइनस sin x, tan x sec square tan x का हो गया आपके पास sec square x, cot sec square x minus cot x का minus cosec square x cot x का हो गया माइनस ऑफ cosec square x, फिर आप sec का tan x sec x sec x का
tan x sec x ठीक है, और लास्ट हमने किया है cosec x का cosec x का माइनस cot x cosec x cosec x cot x।